आप में से क्यों ऐसा होता है? Yes, quantum particles. Okay, so whatever that is the particles or whatever the entities that are governed by quantum principles, most of them will have duality in nature. अगर हम उसको छोड़ दिए तो वो अपने आप कुछ प्रॉपर्टी दिखाई देता है. अगर हम कुछ मेजरमेंट करने लगे तो, देखने लगे तो, उसके साथ कुछ मेडल करने लगे तो देन क्या होता है, वो कुछ तरीक़े से हमको वो क्या है करके दिखाई देते हैं. अगर हम ये तो क्लासिकल पार्टिकल है बुलेट्स, वो तो हम क्वांटम प्रिंसिपल्स सेटिस्फाई नहीं करेगा. हम क्वांटम प्रिंसिपल्स नहीं चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए वो क्या करेगा, वो हर बार ऐसे ही आए. मगर लाइट को स्टडी करने के लिए हमको क्वांटम प्रिंसिपल्स चाहिए. वो फोटोन क्या होता है, फोटोन पार्टिकल है या वेव है, ये सब जानकारी लेना पड़ेगा. इसलिए ये लाइट ऐसा बिहेव करता है. अगर हम इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन में हमको लाइट जैसा बिहेव करता है. मगर मैं अभी आपको वार्न करना चाहता हूँ, ये सिंगल बैंड है ना, ये जो डार्क बैंड है ना इधर, एक बैंड एक डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है. सेंट्रल मैक्सिमा रहेगा और बगल बगल में मिनिमा रहेगा, ये सब रहता है. ओके, सो thus we have two things. One is the particles or the materials that are governed by the classical principles, and the other things that are governed by the quantum principles. Is it clear? So two kinds are there. One is classical things and the another one is quantum things. So classical things you can always do. You know that you already know the one-dimensional equations of motion extended to two-dimensional, three-dimensional. Just do whatever you want. You can always get the whatever the physical quantity that you want to extract from that one, you can always get. But when it comes to quantum principles, you need some different set of equations. Okay, so the same classical principle, one-dimensional equations of motion will never work. We have to have different, and thus the subject quantum mechanics evolved. Okay. So some of the books that I would like to mention here is for your interest of your level, where all these things have been discussed, is Units in Physics by G. Venkatraman and Fundamentals of Physics, Halliday, Resnick, Walker. Okay, and Mr. Tompkins in paperback. This is like a storybook, and even this one is like a more or less story with some technicality, but this one is like a story, so you can enjoy the story here. And then these are famous 5-minute lectures with series of 3 books which you may get hold upon to study more about this quantum mechanics, how it is different from classical mechanics, what are the equations that own the quantum particles and things. Okay. So when it comes to technology, so using the classical principles, whatever you are using now, whatever you know, technology, whenever technology is, when you hear the word technology, whatever in front of your eye, whatever that comes to, like it may be a mobile, TV, radio, whatever it is, all these things are governed by classical principles. Okay, so it may be my microphone where my sound waves is converted into electrical signals at the mic, and then this electrical signal will go to this radio transmitter, and then this radio transmitter is communicating with the device, and then again that will go to speakers, and then again sound waves are generated. All these things are governed by classical principles. Okay, that is the electricity, and that comes in the electrostatics and microstatics. Okay. So now, when it comes to quantum technology, there are no devices of such sort has been developed yet for us. Like we cannot use quantum technology as it. But there are some technology that have been developed using the atoms and photons, and still they are in the labs. They are not yet commercial. Okay, we had to wait a long time to get them
commercial. So now let me come with this background of introducing the what is classical and what is quantum. We will now come to the quantum technologies. Okay. So usually technology means we always come to the communication aspect. Okay. It may be a mobile, TV, or radio. All these things involves in communication. What is communication? There is a communication should have a sender, a receiver, and a message. Okay. If it is a TV station, the anchor who reads the news, she should have some information. She tells in front of a camera. Okay. So then that camera will take the image of the listener, converts into electrical signals, and send it to the satellite transmission point, and from there it will go to satellite, and from satellite it will come to your places. And each places will have satellite receivers, and they will receive the signals and then again beam it out to the local places. Okay, so thus there is a communication of the information from one point to the many different places. So communication. So can we use quantum aspects, quantum principles to improve the communication processes and cryptography? So the communication involves two types. One is without security, that is the one which we are using in radios, television, and meteorology, weather reports, all these things, where you need not to be secure. Like anybody can take that particular information. There is no bound for that. But when it comes to cryptography, it is secure communication. Okay? So secure communication means when you are talking to your friend, nobody should listen to that one, right? Do you like that when you are talking to your friend, somebody should overhear you? Maybe if you talk, then nobody cares. Nobody will listen. But a minister talk to his associates, then people will be very interested. What is that minister telling to other minister? So then that's how we hear that that minister phone has been tapped and all these things. So these things can happen when you use this classical technology that we have now. So these things can be avoided by using the quantum principles. Okay? So no loss of secrecy. And then computation. We all know that I have a laptop here which may be 1 GB, 2 GB RAM, and I have supercomputers in India. So all these things are there. So whatever are there in the present market are all bound by classical principles. Okay? So I will tell you what are these things are bound by. So for now, there also we can use quantum technology, quantum principles, and improve the speed of the computation of our calculations. Initially, maybe in your schools, you may have something like 250 GB RAM computer or 500 GB RAM computer. Okay? So 500 MB RAM computer and so on. But you come to some other internet cafe. A good cafe will have like 2 GB RAM and things like that. That means internet cafe systems will be more faster when compared to the systems that are there in your schools. Have you found that? Huh? Yes or no? Our computer at your home is better than your school computers, right? Yeah, of course. This is because they are using less speed accessories in their computers than the home or internet cafes. So what is communication? Let us come to the first part of these are the three aspects that I will be dealing with another half an hour, right? मैं इधर बात कर रहा हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिए भेज रहा हूँ. आप रहना है उधर. अगर यदि आप नहीं रहे तो मैं क्यों भेज रहा है ना? तो एक सेंडर रहना है, एक रिसीवर रहना है, at least. But here we have 150 receivers, right? So this is what is the communication. And then there should be a message. I should have something in my brain that I can tell you, I can share with you. Right?
So, and that information should be of useful thing, so that you should utilize the information. So a message should be there, and then there should be a carrier of this message. Like if I send any information from here, there should be some media that will send, that will, through which this particular information is reaching you. Currently it is air, right? So this thing, right? So I have to convert my particular information that I have to convey to you. The information, जो भी information मैं आपके लिए तैयार करके रखा हूँ, वो आपको ज़रूरत से पहुँचना है, तो उसको सही तरीका से बोलना है मेरे को, है ना? So वो एनकोड करता हूँ, कैसा बेचूँ उनको करको मैं सोच के मैं आपको बोल रहा हूँ. I'm sending a message. There should be some media that should carry this information. And then decoding a message. मैं इधर बोल रहा हूँ कुछ शब्दों, आप उसको सुन रहे हैं और आपका ही एक मतलब से आप उसको आप डिसॉल्व कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में और उसको दे रहे हैं, आपका नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है, ऐसा, ठीक है? So how is it? Let's see in some pictorial ways how does these things. There is Amba, okay, and there is Bhishma here, and there is a message. Amba has to send a message, a Sainik, okay. So in ancient days, or in as per our mythical stories, how does they do? Amba will write her letter. She will encode what information that she has to send. जो information Amba Bhishma को भेजना चाहता है, उसको इस पत्र पे लिखे, ये encoding होता है. बाद में ये मैसेज कैरियर है, ये सैनिक, वो लेटर को लेकर अम्बा के स्थान से भीष्म के स्थान पर लेकर जाए. भीष्म अभी ये लेटर मिलता है उसको, वो लेटर खोल के पढ़ के उसको डिकोड करता है, और अम्बा जो बोलना चाहती थी वो भीष्म को मिल गया. ये है कम्युनिकेशन का तरीका. शायद 300-400 years पहले, 300-400 सालों से पहले ऐसे ही करते थे कम्युनिकेशन. कुछ दशक के पहले, यदि थोड़ा सा अभी भी होता है, मगर कुछ दशक के पहले लोग पत्र लिखते थे, सोचते थे कि कैसे लिखेंगे, तो पत्र लिखते थे और बाद में पोस्ट बॉक्स में डालते थे, और पोस्ट में उस जगह से दूसरा जगह को लेकर आता था, और पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द कैपेसिटर है 0 बिट. ठीक, यदि मैं कैपेसिटर को ऑन करूंगा, तब तुम लोगों को पता है इधर फील्ड जनरेट होगा, सो करंट पास होगा, इसलिए इधर एक पर्टिकुलर वोल्टेज जनरेट होगा. thus I have a 1 bit. So capacitor can have only 2 states. One is up, one is 0 bit, or otherwise 1 bit. Instead of capacitor you can have a transistor. ट्रांजिस्टर भी पता है ना आप लोगों को, पीएन जंक्शन रहेगा, 2 पीएन जंक्शन रहेगा, और वो एमिटर बेस ट्रांजिस्टर रहेगा, ये सब रहेगा. सो उधर भी अगर मैं एमिटर बेस जंक्शन में पोटेंशियल कंसिडर किया, तो अगर पोटेंशियल करंट पास किया तो 1 बिट बोलूँगा, नहीं पास किया तो 0 बिट बोलूँगा. जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, व्हाटएवर, तुम्हारा आप लोगों का डिजिटल म्यूजिक प्लेयर हो, सब कुछ ये zeros and bits में काम करता है. Okay, so I will come to this one little later as well. So for now, you know that zeros and bits can be generated by applying a voltage across capacitor or transistor. Okay. When it comes to quantum, a quantum state can be 0 or 1 or 0 or 1, 0 and 1.
इधर आप लोगों को कैपेसिटर डिस्चार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, नहीं तो नहीं है, दो ही स्टेट है। मगर इधर क्या होता है, आपको और एक स्टेट मिलेगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्वांटम बिट बोलते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन पता है ना? तो इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है ना? सब लोगों को पता है ना, मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है इलेक्ट्रॉन को, पता है म्यू बी कर को डिनोट करते थे। तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट को एक डायरेक्शन रहता है। यूजुअली हम क्वांटम टर्मिनोलॉजी में अप लिखते हैं या डाउन लिखते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंटम रहे तो उसको अप लिखते हैं, या नेगेटिव रहे तो माइनस लिखते हैं, ओके। सो इसको प्लस हाफ माइनस हाफ, ये आपको पता है ना? यस बराबर। सेम थिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्लस हाफ और माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन को रहता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि दूसरा पॉसिबिलिटी है? हाँ, ये दोनों ही है, ठीक है। आपका सुविधा के लिए पहले इसको बुला देंगे कि 0 बिट ये होता है, 1 बिट ये होता है, ठीक है। ये बिट बोल देता हूं। एटम में इलेक्ट्रॉन गोल मार रहा है, ठीक है। एंड देन वो इलेक्ट्रॉन को कुछ मैग्नेटिक मोमेंटम रहता है, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ओके। अप डाउन कर तो मेरे को क्या पता है, वो ऐसा भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, है ना?